Hello everyone. From today we are going to start the course of CSIR net. And we will start from the course of linear algebra. We will start from the basics with the matrix theory and will move forward in this course. So we are going to start from the matrix theory, this linear algebra. Matrices. Write the definition of matrices. So basically a system of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m horizontal lines called rows and n vertical lines called column. Is said to be m cross n matrix. और rectangular array of numbers is called a matrix. मान लो हमने कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली, ये हमने वर्टिकल लाइंस बना ली, तो जो ये एंट्रीज होंगी ये हमने डिफाइन कर दी, मान लो ऐसे। तो जो ये सेट बनेगा एलिमेंट्स का ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जो ये जो पॉइंट है इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इसको डिनोट करेंगे हम आई जैसे। अब ये एलिमेंट जो आई जे होगा उसमें जो आई किसको डिनोट करता है, आईएथ रो को, एंड जे डिनोट करता है जेएथ कॉलम को। सो बेसिकली ए आई जे डिनोट करेगा हमारे पास आईएथ रो के जेएथ एलिमेंट। सो मान लो ये फर्स्ट रो है और कॉलम भी फर्स्ट है, तो ये क्या होगा हमारे पास A11
ये यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो A12। सिमिलरली ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो का सिक्स्थ एलिमेंट। सिमिलरली ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सिक्स्थ एलिमेंट। 2 फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ रो का सेकंड एलिमेंट, फोर्थ रो का सिक्स्थ एलिमेंट। सो ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई। अब मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं हम, ABCF2। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ABCST ऐसे। फिर AIJBIJF2 ऐसे। अब नोटेशन कैसे मैट्रिक्स की, या तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं जिसके टाइप से, या फिर ऐसे। थर्ड नोटेशन ऐसे होते हैं हमारे पास, और एक नोटेशन होती है ऐसे। लेकिन मेनली हम बस 2 नोटेशन का यूज़ करते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns। अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम्स हैं, देन जो ऑर्डर होगा हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हैविंग m rows matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns. Okay, डिनोट कैसे करते हैं कोई भी मैट्रिक्स को,
A is equal to Aij m cross n, where n varies from 1 to m and j varies from 1 to m. Okay, बस जो ith रो के एलिमेंट कौन क्या हो जाएंगे हमारे पास, एलिमेंट ऑफ ith रो i1 ai2 up to ain, एंड jth कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास a1j a2j up to amj. Okay, आल्सो द नंबर, अगर हमारे पास m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, m इंटू n. Now let's talk about the types of matrices. First is column matrix. A matrix in which there is only one column. For example, 1 4 7. Here there is only one column in the matrix A and rows can be any number. So in general Aij n cross 1, only one column. Second is row matrix. A matrix having only one row. So A is equal to Aij 1 cross n. Okay. Next is square matrix. A matrix in which number of columns equal to number of rows. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाएं तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स. Aij m क्रॉस m or A is equal to n cross n, you can say. Next is diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो आ जाए. सो डायगोनल मैट्रिक्स इज in which non-diagonal elements are zero. डायगोनल अब आपके पास ये हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, जीरो. फॉर एग्जांपल 1 2 5, this one 0. This is a diagonal matrix and it is also a square matrix.
नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। A matrix having same element at diagonal। जो आपके पास डायगोनल होंगे उसके पास सेम नंबर होना चाहिए आपके पास, बाकी जगह ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1, बाकी जगह ज़ीरो। So this is your 4x4 order identity matrix and it is denoted by I. Okay. Note. Scalar matrix is an identity matrix when k is equal to 1 and identity matrix is always scalar matrix. Always a scalar matrix. नेक्स्ट आपके पास जीरो और नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एंट्रीज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है 3x3 में, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ओ से, कैपिटल ओ। ओके, नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, मैट्रिक्स आपके पास क्या बचेगा, डायगोनल और ये वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे। दैट इज aij इक्वल टू 0 और ऑल i ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन j। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 0 7। देखो ऊपर ट्रायंगल बन रही है एलिमेंट के साथ और नीचे से बाकी सब जीरो। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या
हो जाएगा ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे, दैट इज aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j. ओके, now let's talk about equality of matrices. Equality of matrices. Let A is equal to aij and B is equal to bij, B2 matrix, and we will say A and B are equal if and only if they are of same order. And corresponding elements means or entries are equal. तो आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके पास सेम होने चाहिए. नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस. दिस इज सम. दो मैट्रिसेस का एडिशन दैट इज सम कब डिफाइन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. Sum is defined when both matrices have the same order. एंड देन सम कैसे हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की को ऐड कर देंगे और इसका ऑर्डर भी सेम आ जाएगा अगर a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और b भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कब डिफाइन होगी, अगर आपके पास मान लो m क्रॉस p की मैट्रिक्स है और b ये मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब इसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ b मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल आ जाए. अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू p, सो number of rows of B should be equal to P. Then we will define the multiplication AB. और AB का ऑर्डर कितना होगा, M क्रॉस N. ओके, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करते कैसे दो मैट्रिसेस की. मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले ली A B C D, दूसरी हमने ले ली E F G H. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे. सो A की मल्टीप्लाई E के साथ प्लस B की मल्टीप्लाई G के साथ
फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई एफ के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई एच के साथ। सिमिलरली इन दिस सी ई प्लस सी जी, सी एफ प्लस डी एच, तो आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी एंड सम स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू।